Namaste all the students, this is Sagar sir from KANAL'S Academy and we are continuing with our series of the chapter that is D block elements. हमने last time तो D block elements में पढ़ा था. That were some of the properties of the D block elements that we have already studied. Let's take a look of the things that we have already studied in the last session. So last session हम लोगों ने देखा था ये न्यू पोर्शन सिलेबस का डेफिनेटली चैप्टर नंबर 8 है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. So basics of the periodic table हम लोगों ने definitely देखा था, that you can see in the earlier session as well. The types of elements that are present in the periodic table. We are focusing on the inner transition elements and transition elements in this chapter. First we'll be studying the transition elements. Definitions, all that, everything is what we have already seen. 3D series, 4D series, 5D series, 6D series. So there are 4 series. 3D जो है वो 4th पीरियड में है, 4D जो है वो 5th पीरियड में है, 5D जो है वो 6th पीरियड में है और 6D जो है वो 7th पीरियड में है. करेक्ट. जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम, जिंक का स्टेटस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज, ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ऑक्सीडेशन स्टेट, physical properties of the first transition series. Come on. Now students, what we'll be seeing is periodic trends and its basics first of all that we have already studied. Now do you all remember the atomic radius वाला theory जो हम लोगों ने periodic table standard 11 में पढ़ा था कि when you're talking about the atomic radius from left to right in the periodic table it decreases and the atomic radius from top to bottom in the periodic table increases. As you can see here in this periodic table as well, left to right atomic size कम होता है, top to bottom atomic size बढ़ता है. Why does it decrease from left to right? Because the number of shells remain the same. The nuclear charge increases by 1 unit every time you change the group, and that is why the nuclear charge is increasing. So the attraction between the electron and the nucleus goes on increasing. Therefore, left to right in the periodic table, the atomic size decreases. Now, top to bottom in the periodic table, first of all, the number of shells are increasing, due to which the screening effect is also increasing. Nuclear charge is also increasing as well, definitely, because the atomic number is increasing, but its effect is not much because of the number of increase in the number of shells. That is why top to bottom in a group the atomic size increases. So just for us to revise, बराबर, in short, atomic radius जो है left to right वो कम होता है, ionic radius left to right कम होता है, electron affinity, that is a power to attract the electrons, electron negativity, that is to keep the electrons in the shell, electron affinity, electron negativity, almost similar concept hai, there is little bit difference between the two. Electron affinity, electron negativity is the power to attract the electrons that increases from left to right. Ionization energy, that is, what is ionization enthalpy? Do you all remember? The energy required to remove the electron, loosely bound electron from the last shell of the atom, that is called as ionization energy. तो जितना बड़ा मेरा एटॉमिक साइज होगा उतना इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा एंड जितना छोटा मेरा एटॉमिक साइज होगा उतना इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा. सो आयोनाइजेशन एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एंड आयोनाइजेशन एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बराबर. Electron affinity, ionization energy and electron negativity decreases from top to bottom because the atomic size increases. Now to explain you once again the basics, let us see atomic size का जब हम बात करते हैं, atomic size is directly proportional to the number of shells. Atomic size is inversely proportional to the nuclear charge. Shells बढ़ेगा atomic size बढ़ेगा, nuclear charge बढ़ेगा atomic size कम होगा. Atomic size is directly proportional to the screening effect. What is screening effect और shielding effect? मेरे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है उन पे अट्रैक्शन का असर न्यूक्लियस का कम होता है. किसके वजह से कम होता है? मेरे जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है उनके वजह से. ठीक है. सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ स्क्रीनिंग इफेक्ट. तो जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना मेरा एटॉमिक साइज बढ़ेगा. नेक्स्ट टॉपिक, आयोनिक साइज. ऑलवेज रिमेंबर दैट द साइज ऑफ द कैटायन इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द एटम. फॉर एग्जांपल Na एंड Na प्लस में से Na का साइज इज बिगर देन Na प्लस. Why so again? Because when one electron of Na is removed, the nuclear charge increases and the atomic size decreases. Similarly, the size of anion is always bigger than the size of the atom. Like Cl minus and Cl में से Cl minus बड़ा है because when the electron is incoming,
that is the electron enters the Cl atom, at that time the nuclear charge decreases and therefore the atomic size increases. Next is ionization enthalpy, that is the energy required to remove the most loosely bounded electron from the atom, isolated gaseous atom. What is isolated gaseous atom? Means individual atom. So ionization enthalpy is inversely proportional to the number of shells. जितने शेल ज्यादा होंगे उतना मेरा इलेक्ट्रॉन दूर होगा, जितना मेरा इलेक्ट्रॉन दूर होगा मेरे न्यूक्लियस से उतना उसको अट्रैक्शन कम होगा और मुझे कम एनर्जी यूज करना पड़ेगा टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन. ठीक है. Second is nuclear charge is directly proportional. Ionization enthalpy is directly proportional to nuclear charge. That means what? That means कि मेरा न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ते जाएगा मेरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी वैसे वैसे बढ़ते जाएगा. क्यों? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इज द पावर टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स. तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा मेरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा. नेक्स्ट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज. इफ द एटॉमिक साइज इज बिगर, it is easier to remove the electron and less energy will be required. So that is why it is inversely proportional. Same, ionization enthalpy is inversely proportional to screening effect. So what is that? Screening effect, that is outermost electron जो है उसका attraction मेरे nucleus के तरफ से कम हो रहा है. So that is why it is easier to remove the electron from the last shell. Next topic, electron negativity, that is to attract the electrons towards the atom. So electron negativity is inversely proportional to the atomic size. Now why so again? Because atomic size जितना बड़ा होगा उतना मेरा न्यूक्लियर का पावर कम होते जाएगा towards the other electrons. Next, electron negativity is directly proportional to nuclear charge. Nuclear charge is the power to attract the electrons. So जितना ज्यादा मेरा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना मेरे एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगा. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट. जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना न्यूक्लियर चार्ज कम एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम. अब ये पूरा रिवाइज करने के लिए यहां पे देखा जाए राइट हैंड साइड. सो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज कम हो रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रहा है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है. टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डिक्रीजिंग एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीजिंग. ठीक है, दिस इज व्हाट यू रिक्वायर वेरी मच इन दिस चैप्टर. सो now we come across the atomic and ionic radii of d block elements. So let's say atomic radius of the d block elements of transition series decrease gradually from left to right. Left to right, that is scandium to zinc. जब मैं जाता हूँ atomic number 21 to atomic number 30, my atomic size goes on decreasing. Why? For the same reasons that we have discussed earlier. That is, the atomic size is decreasing from left to right because the number of shells remain the same. Correct? Nuclear charge is increasing. Every time you go from left to right, the nuclear charge is increasing. See this point. As we move across a transition series from left to right, the nuclear charge increases by 1 unit at a time. Scandium to titanium जब हम जाते हैं तो atomic number 1 unit से बढ़ रहा है, 21, 22, 23, 24 and so on. So my nuclear charge is also increasing by 1 unit each at a time. The last filled electron enters the penultimate n-1d subshell. Penultimate मतलब second last shell. You all know this from electronic configuration of d block elements very well कि मेरा जो last electron enter होता है वो 3d में enter होता है और मेरा 3d जो है वो second last subshell है, last नहीं है. कौन सा है? second last. तो ये अगर मेरा 4s, this cannot be 4s, this is just a representative diagram. अगर ये last है तो ये second last shell है, तो वो सेकेंड लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे. अब अगर सेकेंड लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे, प्लीज पे अटेंशन टुवर्ड्स दिस पॉइंट वेरी वेल. अगर सेकेंड लास्ट सेल में मेरे इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे तो वो लास्ट सेल की तरफ स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ाने चाहिए. अगर लास्ट सेल की तरफ स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए. सो देयर आर टू फैक्टर्स हियर डियर स्टूडेंट्स. पहला है लेफ्ट टू राइट मेरा शेल सेम रह रहा है बट मेरा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो मेरा न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक साइज कम करने का कोशिश करेगा और मेरा स्क्रीनिंग इफेक्ट एटॉमिक साइज बढ़ाने का कोशिश करेगा. बट यहां पे न्यूक्लियर चार्ज इज मोर प्रोनाउंस्ड देन स्क्रीनिंग इफेक्ट. एंड व्हाई इज दैट सो? इट इज मोर प्रोनाउंस्ड देन द स्क्रीनिंग इफेक्ट बिकॉज स्क्रीनिंग इफेक्ट इज लेस प्रोनाउंस्ड हियर इन दिस केस बिकॉज मेरा जो सेकेंड लास्ट शेल है वो डी सब शेल है और डी सब शेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है. However, d orbitals in an atom are less penetrating or more diffused and therefore d electrons offer smaller screening effect. अगर ये d नहीं होता, कोई और सबशेल होता like s और p,
then the effect would have been totally different. My electrons are entering the second last subshell. मेरा स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ना चाहिए था, बट डी ब्लॉक एलिमेंट स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा नहीं कर सकते हैं. दैट इज व्हाई द एटॉमिक साइज इज डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. So the result is that the effective nuclear charge also increases as the atomic number increases along a transition series. Hence the atomic radii decrease gradually across the transition series from left to right. Now, ionic radii of the transition element show the same trend as the atomic radius. Yes, the elements of the first transition series show variable oxidation state. The trends in ionic radii thus can be studied with, now there are 2 points. You have to have apples to apples comparison, right? हम लोग दो अलग अलग चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते, तो हम उनको कंपेयर करेंगे जो एलिमेंट्स है having same oxidation state, like scandium in +3 oxidation state, titanium in +3 oxidation state, vanadium in +3 oxidation state, and so on. So you cannot compare Sc2+ with vanadium 4+. It is not correct. ठीक है? Now considering various oxidation states of the same element like Sc+, Sc+2, Sc+3, ऐसा भी हम कंपेयर करेंगे. So हम दो चीजों से आयोनिक रेडियस कंपेयर करेंगे. ठीक है? अलग अलग एलिमेंट्स बट सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेम एलिमेंट बट अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट. सो वन थिंग वंस अगेन दैट वी नीड टू रिमेंबर इज व्हाट, कि अगर मेरा एक एटम है तो उसका जो कैटायन है दैट इज स्मॉलर इन साइज ऑलवेज, और अगर मेरा एनायन है तो इट इज बिगर इन साइज देन द एटम. ठीक है? लेट्स सी नाउ. फॉर द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट with an increase of nuclear charge, a gradual decrease in ionic radii was observed. The trend is pronounced for the divalent ions of the first transition series. Divalent ion is M+2. Trivalent ion is M+3. So first of all, यहाँ पे देखा जाए एकदम अच्छे से atomic and ionic radius. ठीक है? Scandium to zinc. हम atomic radius पे इसी टेबल में देख रहे हैं. Scandium to zinc, you can see left to right. This is not top to bottom. See, mind you very well, the table is drawn top to bottom. But scandium to zinc periodic टेबल में अगर आप इमेजिन करेंगे तो कैसा है? लेफ्ट टू राइट. सो मैं इसको लेफ्ट टू राइट बोलूंगा, टॉप टू बॉटम नहीं बोलूंगा. स्कैंडियम टू जिंक व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट नाउ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यू कैन सी स्कैंडियम के बाद एटॉमिक साइज किस तरीके से कम हो रहा है, राइट? बिकॉज लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. हाँ, जिंक के लिए भले ही बढ़ रहा हो, रीजन बीइंग दैट इट हैज कंप्लीटली फिल्ड शेल्स, सो देयर इज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, and that is why the atomic size increases a bit for zinc. ठीक है? Now in +2 oxidation state, see +2 oxidation state, scandium and titanium usually do not show. That is why we do not compare them. So +3 oxidation state में अगर आप देखें, scandium से लेके बराबर ऐसा है निकल तक, the atomic size is decreasing. 73 ionic size, sorry, 73, 67, 64, 62, 65, 65, 61, 60. So left to right, barabar, what we are able to see is that the ionic radii has decreased for the same oxidation state, that is +3. So the oxidation states show difference of 1 unit, M+, M+2, M+3 and M+4 and so on. We'll see this. With higher oxidation state, the effective nuclear charge also increases and hence decrease of ionic radii can be observed. Ionic radii of transition elements are smaller than the ionic radii of the representative elements of the same period. See, these are two different topics. First 2 points पहले explain करते हैं हम. अब हमने क्या कंपेयर किया था लास्ट स्लाइड में? इस तरीके से कंपेयर किया था. अब हम ऐसे कंपैरिजन करेंगे. अब वनाडियम देख लीजिए, वनाडियम एटम बराबर इन नॉर्मल स्टेट इट इज 135 पिकोमीटर्स, इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज 79 पिकोमीटर्स, एंड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज 64 पिकोमीटर्स. सो अब देख रहे हैं कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, सो मेरे वनाडियम का आयोनिक साइज कम हो रहा है. व्हाई? बिकॉज एज एंड व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड गोज ऑन इंक्रीजिंग, द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, the nuclear charge increases and therefore the ionic size decreases. This is evident for all. Manganese 127, then it goes to 82 picometers, then it goes to 65 picometers in +3 oxidation state. Getting it? Now एक पॉइंट रह गया हमारा. Ionic radii of transition elements are smaller than the ionic radii of the representative elements of the same period. Dear students, representative elements is group 1 and group 2. So when you are talking about the S block elements, तो S block elements का और D block elements का अगर हम ionic radii compare करें, so ionic radius of D block elements is smaller than that of the S block elements, because left to right also it goes on decreasing.
Now comes his next topic, that is ionization enthalpy. Once again, I am repeating the definition. What is ionization enthalpy? Energy required to remove the most loosely bounded electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom. So what is that? बराबर मेरा जो लास्ट सेल है उसका एक इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है आइसोलेटेड एटम में से, दैट इज अकेले एक एटम में से. तो जो एनर्जी मुझे अप्लाई करना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी. क्यों आयोनाइजेशन? बिकॉज जब मैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो वो आयन बन जाएगा. दैट इज व्हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी. नाउ सी दिस पॉइंट वेरी वेल. The ionization enthalpies of transition elements are in between of those of S block और P block elements. See here dear students in this table. यहाँ पे आपको दिख रहा है ये D block elements है. D block elements S block और P block के बीच में है. Left to right ionization enthalpy goes on increasing. So इनका ionization enthalpy कम होगा, इनसे ज्यादा D block का होगा और D block से ज्यादा P block का होगा. So S block has the least ionization enthalpy, then is D block and then is P block because the atomic size goes on decreasing. This suggests that the transition elements are less electropositive than elements of group 1 and group 2. Correct. Group 1, group 2 elements donate their electrons easily, so they are more electropositive as compared to what? Group D elements. Why? Because D block के elements का electron निकालने के लिए ज़्यादा energy apply करना पड़ता है because their atomic size is smaller as compared to the S block elements. Generally, in the lower oxidation state, these elements form ionic compounds. Depending on the condition, they form ionic or covalent bonds. Generally, in the lower oxidation state, these elements form ionic compounds, and in the higher oxidation state, they form covalent compounds. So, lower oxidation state में क्या बनाएंगे? Ionic, and higher oxidation state में covalent compounds. Now, ionization enthalpy in table 8.6 reveal that a given element there is substantial increase from the first ionization enthalpy to the third ionization enthalpy. Now, what is first and third ionization enthalpy? स्कैंडियम में से जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, सी स्कैंडियम में लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, इफ यू ऑल रिमेंबर. सो बराबर स्कैंडियम में से जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 उसके इलेक्ट्रॉन s में है, 4s में, और एक उसका इलेक्ट्रॉन 3d में है. सो व्हेन यू आर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स ie1, मतलब ये Sc+1 है. जब आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये बन जाता है Sc+2, और 3 इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये बन जाता है Sc+3. So Sc+2 and Sc+3. So ie1, ie2, ie3. तो स्कैंडियम का जब हम कंपेयर करें, बराबर स्कैंडियम का कंपेयर करें हम लोग, बराबर, so Sc+, Sc+2 and Sc+3, the ionization enthalpy is increasing at every step. सेम वे टाइटेनियम का देखिए, सेम वे वनाडियम का देखिए. हम स्कैंडियम का स्कैंडियम से ही कंपेयर कर रहे हैं, ie1, ie2, ie3. अब आप कंपेयर कीजिए ये सेकंड पॉइंट. As we move across the transition series, slight variation is observed in the enthalpies ie1, ie2, ie3. Now you compare scandium to zinc from left to right in the periodic table. As we know, left to right in the periodic table, atomic size is decreasing. So ionization enthalpy should go on increasing. तो देखिए स्कैंडियम से थोरियम बढ़ा, फिर बराबर थोड़ा सा कांस्टेंट रह रहा है. मैंगनीज के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बिकॉज मैंगनीज हैज हाफ फील्ड स्टेबिलिटी. देन आयरन, देन कोबाल्ट, देन निकल, देन जिंक. देन जिंक के लिए और ज्यादा बढ़ जाता है, बराबर. व्हाई जिंक के लिए बहुत बढ़ गया? बिकॉज जिंक हैज ऑलमोस्ट कंप्लीटली फिल्ड शेल. थर्ड, दैट इज व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक. The atom of the elements of the transition series. Now we are coming to a very important topic. Now say 3D series है, 4D series है, 5D series है, 6D series है. ठीक है, 3D के नीचे 4D है, 4D के नीचे 5D है, 5D के नीचे 6D है. ठीक है, अब ऊपर से नीचे आते आते इन द पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज शुड गो ऑन इंक्रीजिंग, सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड गो ऑन डिक्रीजिंग. ये ट्रेंड 3D और 4D में पॉसिबल है, बट 4D से 5D जब आप आते हो ना तो ये ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है. उसका रीजन ये स्लाइड में आएगा, प्लीज पे अटेंशन. द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज पोजेस फिल्ड 4f ऑर्बिटल्स. नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांजिशन सीरीज of which 5D. 4f orbitals show poor shielding effect because of their peculiar diffuse shape. As a result, the valence electrons experience greater nuclear attraction. So a greater amount of energy is required to ionize the elements of the third transition series, and the ionization enthalpy of the elements of the third transition series are much more higher than the first and the second transition series. We'll explain all the things here.
आप देख सकते हैं 3D है, 4D है, 5D है, 6D है, ठीक है। आपको मालूम है यहाँ पे 4F सीरीज आ जाता है, 4F यहाँ से चालू होता है 6th पीरियड से 5D के यहाँ पे, ठीक है। अब हो क्या रहा है, 3D to 4D atomic size is increasing, correct, that is why the ionization enthalpy is decreasing, but 4D to 5D यहाँ पे 4F orbitals 5D जो outer है उसको shield कर रहे, and because the shielding effect is very poor, the nuclear charge is more and the electron is attracted towards the nucleus more, and that is why it is difficult to remove the electrons from 5D series, and that is why 5D series का ionization enthalpy 4D से ज्यादा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। Getting it? So 3D to 4D ionization enthalpy is decreasing, but 4D to 5D ionization enthalpy is increasing. Now see here, titanium आप देख सकते हैं बराबर, then zirconium and then hafnium. Hafnium is in 5D series. So you can see 5D series का ionization enthalpy बहुत ज्यादा है। यहाँ पे zirconium and niobium का ज्यादा है, बट यहाँ पे देखेंगे ना मेजोरिटी एलिमेंट्स का 3D सीरीज से कम है। ये वाला लाइन 4D का है, ये वाला लाइन 3D का है, ये वाला लाइन 5D का है। So you can see 5D all the elements have a higher ionization enthalpy as compared to the other elements. Now we come towards the third topic of today's lecture, that is formation of interstitial compounds. Now this is a very easy topic, pay attention. When small atoms like hydrogen, carbon or nitrogen are trapped in the interstitial spaces within the crystal lattice, the compounds formed are called as interstitial compounds. First of all, try to understand what is a crystal lattice. When you're talking about a metal, the atoms of the metal are arranged at a perfect geometry. This perfect geometry is called as a lattice. Okay, ये अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं। नाउ ये लैटिस के अंदर का जो शेप है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिटल स्पेसेस, ठीक है। इसके अंदर का स्पेस तो एम्प्टी है, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरस्टिटल स्पेसेस। सो अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पूरा डायग्राम है, इसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। इसके अंदर का जो स्पेस है, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरस्टिटल स्पेस। नाउ ये इंटरस्टिटल स्पेस में अगर एक छोटा सा एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन या नाइट्रोजन आ जाता है, तब वो एटम को हम लोग बोलते हैं इम्प्योर, इसको हम लोग इम्प्योरिटी बोलते हैं। जब ये इम्प्योरिटी आ जाती है क्रिस्टल लैटिस के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिटल कंपाउंड्स। सो एज यू कैन सी, दिस इज अ क्रिस्टल लैटिस। ये क्रिस्टल लैटिस के अंदर आप देख सकते हैं बराबर ऐसा ये स्फीयर्स आ गए हैं, सो दैट इज इंटरस्टिटल कंपाउंड्स। Sometimes sulfides and oxides are also trapped in the crystal lattice of transition elements. See, this is how the atoms of the metals are arranged. उसके बीच के जो स्पेस है उसमें ये एलिमेंट्स आ जाते हैं। Steel and cast iron are examples of interstitial compounds of carbon and iron. Do you know these are alloys? So alloys भी इसी तरीके से बनता है, तो alloy is a kind of interstitial compound. Now due to the presence of carbon, the malleability and the ductility of iron is reduced and its tenacity increases. You know malleability and ductility that has been making into sheets and wires. Tenacity is the strength. उसका strength बढ़ जाता है, but malleability and ductility थोड़ा सा कम हो जाता है। So this is a perfect crystal with interstitial spaces, and इसके अंदर अगर एक बाहर का एटम आ गया like carbon, hydrogen or nitrogen, then it becomes a defect. Some properties of interstitial compounds, very important, they are hard and usually good conductors of heat and electricity. Their chemical properties, mind you, are very similar to the parent element. Their physical properties might change a little, but their chemical properties are similar to the parent element. Their melting points are higher than the pure metals. Melting point increases. The density is less than the parent metal. The metal carbides are chemically inert and extremely hard as diamond. You know carbides, metallic carbides. बराबर जब कार्बन आ जाता है इन द मेटल, सो इट बिकम्स वेरी हार्ड. हाइड्राइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर यूज्ड एज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स. यू ऑल नो व्हाट अ रिड्यूसिंग एजेंट इज, द वन हु लूजेस इलेक्ट्रॉन, बराबर दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. सो हाइड्राइड्स जो है ना ट्रांजिशन मेटल्स के, दे आर यूज्ड एज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स. सो डियर स्टूडेंट्स, we have seen today many topics covering what, covering the transition elements. Getting it? Please read the textbook once, and you have any doubts, please ask in our comment section and we'll reply as soon as possible. This is Sagar Kanal from KANAL'S Academy signing off. We'll continue this chapter in the next series. Thanks a lot.